So yes, hello everyone, this is Abhay and we are going to continue with our lecture for number 3. And yes, like we have seen in this description and the title, like I'm going to introduce a great contest which is going to start, right? So let me just introduce what we are going to study in this lecture, which is the smallest prime factor and also known as SPF. लाइक ये जो है CF की कंटिन्यूशन में पढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक बहुत अभी रिसेंट कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन आया था। पहले मैं इसमें पूरा समझा दूंगा, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, ठीक है। आप उसको करना और नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन की पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू व्हाट इज द कॉन्टेस्ट एंड या दिस वीडियो इज अबाउट द न्यूटन स्कूल. So Newton School is a high tech company which teaches you the full stack development from absolute basic to advanced level. And they have give you live classes, the industry projects, and the personal mentoring also, right? And the mentoring will be given by the top-notch mentors which are placed in the top companies, right? And they have a feature called as the Launchpad where you can write and set the code. And after the completion, you will be getting a certificate of completion, and you will be taught by the top mentors in the industry, and you can check out the free courses here. And still you have any doubt, you can check out the FAQs right here, and the website description will be in the website link will be in the description, right? So what is this contest about? So like this is a grand coded contest by the Newton School also. So the best thing is that in this contest is here is the hiring partners like Zomato, Baiju's, Razorpay, Meesho, and Vime, right? So and another thing, you can participate without giving a single fee. Like it is a free contest, and you will be getting a lot of prizes like the cash prize of first three winners, which is a huge prize like 50k, 25k, and 15k, right? And we go on, and you will be getting Amazon vouchers, the free Amazon Echo keyboard, mouse, and goodies like a huge gadget for 1500 plus cards they have. So you will be getting a huge, you have the huge probability of getting these prizes, right? And right now there are 45k plus registration. You can also do it, and you will be getting a huge experience while participating in the virtual world in this coding contest, right? So there are 4 days to go. You have to register it quickly and get your seat registered and do participate, right? So it will be a great experience. So let's come back to our topic, which is SPF. And सो अभी तक हमने पढ़ा था कि सीव क्या करता है कि हमें एक रेंज में हमें प्राइम नंबर्स देखने हैं कि वो प्राइम है कि नहीं। जैसे हमने हमें एक गिवन एरे है, जैसे मान लो हमारे पास इंटीजर गिवन है 10, हमें 10 से पहले वाले सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं, विच इज़ 2, 3, 5 एंड 7। तो इसको हम ये प्राइम नंबर एक वो एरे में शो कर लेता है कि इन नंबर्स को ट्रू कर लेता है। ये हमने सीव में अब तक पिछले लेक्चर में पढ़ा। तो अब हमने फाइंड करना SPF, मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। जैसे हमें नंबर गिवन है 10, तो हमें 10 तक सारे नंबर्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 इन सभी नंबर का पहला ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर जो उसको डिवाइड करता है। 1 को तो वी आर नॉट कंसिडरिंग 1 इन दिस, राइट? 1 विल बी आंसर और 1 विल बी कंसिडर्ड 0। 2 को उसके छोटा प्राइम नंबर कौन डिवाइड करता है? 2। 3 को 3, 2 को 4 को 2, 5 को 5 ओनली बिकॉज 5 इज प्राइम नंबर, 6 को 2, 7 को 7 ओनली, और 8 को 2, 9 को 3 एंड 10 को 2। इफ देयर इज अगेन आगे 11 लिखूं तो 11 को कौन डिवाइड करेगा? 11, राइट? अब SPF की जरूरत कहाँ पड़ती है? जैसे अभी जो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा, उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि हमें एक नंबर के डिवाइजर्स निकालने हैं कि वो डिवाइजर कहीं और अकर नहीं करने चाहिए। जैसे मैं अभी 10 की बात करूँ और मुझे एक नंबर गिवन है कि बहुत बड़ा नंबर गिवन है, जैसे मान लो कि 250, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 250 और बड़े से नंबर गिवन है, मैं चाहता हूँ कि 10 का कोई भी डिवाइजर इसमें अकर ना करे। तो उसका बेस्ट तरीका क्या होगा? मैं 10 को 10 के SPF से डिवाइड करता जाऊँगा। जैसे 10 का SPF क्या है? 2, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया और मैं 2 को एक वेक्टर में स्टोर कर लिया कि रेपिटेशन ना हो। तो एक बारी से जैसे मान लो कि मेरे पास 2 का और ले लो मल्टीपल, जैसे मान 20 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 20 के सारे यूनिक प्राइम फैक्टर्स में स्टोर कर लूँ। तो क्या करूँगा? 20 का SPF क्या है? 2, तो मैं 2 को स्टोर कर लिया और 20 को मैं 2 से डिवाइड करता जाऊँगा जब तक वो 2 से डिविजिबल नहीं होता। मतलब क्या बन जाएगा? 5। अब 5 का SPF क्या है? 5। तो अब मैं 5 से डिवाइड करता जाऊँगा तो 1 नहीं बनेगा, तो 1 बन जाएगा फिर ये। अब मतलब 20 के यूनिक प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 एंड 5। अब मैं 2 और 5 को इसके प्राइम फैक्टर से चेक कर सकता हूँ, राइट? सो इट
मतलब ये कोड की कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम कर देता है, और इट इज़ लाइक अ वेरी perfect method to find all the unique prime factors. And yeah, like it is a very important topic. After doing the sieve you must know about this, right? So let me just dive into the code. Like जो हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा था sieve के बारे में. So I have commented the SPF part. Let me just erase अभी तक erase कर देता हूँ अभी के लिए. So अभी तक हमने ये पढ़ा था कि sieve क्या करता है. एक मिनट. कि sieve हम पहले 1 से लेकर 2 से लेकर n तक सारे नंबर चेक करेंगे. अगर वो नंबर ट्रू है, मतलब वो नंबर अभी तक अगर नहीं करा है, तो हम उसके सारे डिवाइजर्स आगे जो आएंगे हम उनको फॉल्स कर देंगे. कि मतलब पहले जैसे 2 आया तो 2 से लेकर मैं 10 तक सारे 2 के मल्टीपल 4 6 8 उनको मैं फॉल्स कर दूंगा कि वो प्राइम फैक्टर नहीं है. तो ऐसे ही सीव काम करता है. अब मैं यहाँ पर जैसे मैं चेक करके देखता हूँ सी आउट आई, राइट, एंड इफ आई प्रिंट हेयर 11, like you can ignore this. This is मैं चेक कर रहा था कि सी SPF वाला पार्ट. So let me just run this program. It's taking so long. Okay. Yeah. So if I write here 11, then it must give me the first prime factor जो 11 से छोटे हैं, which is 2 3 5 7. अब मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 11 तक के सारे SPF स्टोर हो हर नंबर पे. So what will I do? So I will create an SPF vector, name as SPF. You can name it anyway, of size n+1, right? And if अगर वो नंबर पहली बार ही आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर का SPF वो खुद है, ठीक है. तो यहाँ पर अगर वो नंबर पहली बार ही आ रहा है तो देन SPF ऑफ I is equal to I, right? And yeah, let me just erase this. Now here comes the part कि हम जैसे मान लो कि 5 आया और मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 के सारे मल्टीपल्स को मैं फॉल्स कर रहा हूँ. जैसे मान लो 5 के मल्टीपल्स में आ गया है 50, देन आई हैव 50 को भी फॉल्स कर रहा हूँ. तो पर यहाँ पर एक केस आता है कि जैसे मानो कि 50 है, 50 में 2 भी आ रहा है, राइट. सो लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट. या सो अब जैसे 50 है तो जैसे पहले देखो मैं 5 के पे आया हूँ तो मतलब मैं 3 में कवर कर चुका हूँ. तो मतलब 50 का मैं अभी तक SPF डाल चुका हूँ 2, ठीक है. मतलब कि मैं SPF कैसे डाल रहा हूँ अभी के लिए मान लो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ SPF ऑफ J इज इक्वल टू I, क्योंकि I उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है. पर अब देखो, अब जब SPF 50 की टर्म में आएगा तो 50 की टर्म में 5 डिवाइड करेगा तो मैं क्या करूँगा कि 50 का SPF 2 की जगह रिप्लेस हो जाएगा 5 से. पर ये गलत है. मैं SPF इस केस में चेंज तभी करूँगा जब वो पहले कभी अगर नहीं करा होगा. इफ़ SPF ऑफ J is equal to 0, then only I will change this, right? And here the SPF 50 का क्या होगा, 2 ही रहेगा ऊपर वाला, 5 नहीं होगा चेंज, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर 2 हो चुका हुआ है, which is SPF of J is not equal to 0. And at last I will print all these values from I to n plus 1, and here I will print SPF of I, right? And yeah, I will अभी मैं 11 input देता हूँ फिर दिखाता हूँ. It is running from 0, you can ignore 0, right? It's taking time. The पीछे चल रहा है कुछ, ठीक है. So 11, yeah. Now you can check here. Here is a 0 का SPF 0, 1 का SPF 0, ठीक है. We are not considering these two. Now you can check 2 का SPF क्या आ रहा है 2, 3 का क्या आ रहा है 3. Now let me just do something more great. SPF of I, right? Right. Then let me just change the range of n to let's suppose 50, right? Let's do it. Just a second. Yeah, let's change to 33, 34, right? Yeah. Now you can see SPF of 2 is 2, 3 is 3, 4 is 2, 5, 6, 7, 8, 11. 12 is 2, 13 is 13 because 13 is prime, right? You can check it out right here. And yeah, 33 is 3 because not divisible by 2, right? And let me just 25 is 5 because it is not divisible by 2 and neither of 3, right? So yeah, and this is the logic how we can store the SPF and how it is used. Yeah, here, right here.
So let me just dive into the question which we are giving to the homework. Like it is the beginner contest 25 215 and the D problem is co-prime 2. The question is the you are given a sequence n of n integers and you have to check for every integer k in the sequence. It must give the GCD of I to k with each element equal to 1. Let's suppose the question is saying like this. Just a minute. Let me just erase this. Let's suppose that the m is 10 and n m. Oh, sorry. Let's suppose the m is, yeah, m is equal to 4. So what I need to do, and the array is 1, 2, 3 and 4. So I have the m is 1, 2, 3 and 4. Now I have to check 1 with all of these, 2 with all of these, 3 with all of these and 4 with all of these. If for 1 all this gives the GCD equal to 1, GCD of m comma a of I is equal to 1 फॉर ऑल एम्स. अगर जिस m के लिए ये सभी एलिमेंट्स के साथ GCD 1 दे रहा है तो हम उस नंबर को प्रिंट करेंगे, राइट. सो GCD 1 क्या दे रहा है? GCD 1 का क्या मतलब होता है कि जैसे नंबर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नंबर 7 है, जैसे यहाँ पर नंबर 2 है, यहाँ पर नंबर 5 है, मतलब पहले नंबर कोई भी फैक्टर दूसरे में अगर नहीं कर रहा है तो तब हम GCD 1 देते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ करनी है. अब इसमें क्या होगा, हम हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स को क्या करेंगे, वेक्टर में हैश कर लेंगे, एक मैप में हैश कर लेंगे. जैसे 1 का प्राइम फैक्टर क्या है, 1, इसका क्या है 2, इसका क्या है 3, इसका क्या है 2. तो 1, 2, 3 जिस नंबर पे नहीं आए, जिस इन नंबर में जिसमें नहीं आएंगे वो हमारा आंसर होगा, कि वो हर एक नंबर के साथ GCD 1 देगा. सो दिस इज द लॉजिक एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट by tomorrow because this is the homework, right? So this question, this link will also be in the description, right? And do check it out, this contest, grand coding contest. It is very helpful. I am also going to participate in this, right? And let's see who win the contest. And I guess the huge amount of coders will be there, and the grandmaster will also be there to win this cash amount. Like it is a huge amount, right? Then yeah, let's give our best and compete with each other. So okay, till then, happy coding and thank you, right?